हाय, मैं हूं सौंदर्या शर्मा एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल नाउ। My hair is fine? Yeah, your hair is fine. Yes. जब खूबसूरती इतनी हो तो हेयर विल बी फाइन, डिंपल्स ऐसे हो तो हेयर विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन। कैसी हो सौंदर्या? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। हाथ तो दो, हेलो तो मुझे बोलो। लगा आप हेलो कर रहे हो ऐसे। नहीं, आपको लग रहा था मैं बच्चन साहब की तरह ऐसे कर रहा No, हूँ। sometimes some people express themselves like even I have a habit of हाथ फेंक के बात करना, तो पता नहीं चलता हाथ मिला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं हाथ फेंकता हूँ पर बातें नहीं फेंकता हूँ मैं। Impressive. वो जरूरी होता है। Yeah. नहीं तो फिर कोई सीरियसली नहीं लेता यार। Yeah. है ना? Yeah. यार मैंने देखा कि वीडियो में बहुत क्यूट है, एक यंग लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा है, प्यार हो जाता है। एक ओल्डर लड़का तुम्हारे पीछे पड़ता है, प्यार हो जाता है। कितनों को तुमने आई लव यू बोला हुआ है रियल लाइफ में और कितनों ने तुमको आई लव यू बोला हुआ है? क्या सीन जेन्युइनली? ज्यादा ने मुझे आई लव यू बोला हुआ है। मैंने तो हार्ट ब्रेक ज्यादा किए हैं। तुमने हार्ट ब्रेक ज्यादा किए क्या? बहुत, बट फ्लिंग्स तो हुए हैं। आई लव यू भी बोला है एक दो को, बट ज्यादा नहीं, और ज्यादा बोलूंगी भी नहीं। नहीं तो ये जब फ्लिंग्स हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? क्योंकि कभी कभार फ्लिंग में एक इंसान अटैच्ड हो जाता है, कभी कभार फ्लिंग होता है तो बाद में उनको याद नहीं रहता कि यार ये फ्लिंग है, वो तो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? Yes, हुआ है डेफिनेटली, बट आई एम समबडी थैंकफुली दैट आई नो दैट आई डोंट हैव टू हर्ट एनीवन्स इमोशंस। मेरे को किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना है कि यू नेवर नो। आई बिलीव इन कार्मिक साइकिल, आई बिलीव इन एनर्जीज। तो मुझे लगता है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा है तो पहले से क्लियर कर दो, और अगर है तो जस्ट गो एंड डंगे की चोट पे से ओके आई एम गेम फॉर इट। देखो, तुम शायद किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हो, हाँ। पर सामने वाले को लगता है कि उसका दिल टूटा है ना, ये अपने हाथ में तो नहीं होता नहीं, है, और आदू का अपने आप ही टूट जाता है ना? तो ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारा दिल टूटा है और तुमको लगा वक्त उससे रिकवर करने के लिए? ऑनेस्टली डेफिनेटली, बिकॉज जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो यू आर विद योर 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग। तो यार अटैचमेंट होता है। इंसानों को तो जानवर तक से प्यार हो जाता है, अपने पेट से, तो इंसान क्या चीज़ है। तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक्स हुए हैं और दिल भी टूटा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार में, दोस्ती में भी ऐसा होता है यार। जहाँ भी आप दिल लगा लो वहाँ होता है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशनशिप होना होता है। नहीं, कितना वक्त लगा, which has been the longest time जब को रिकवर to get over? It takes time. Like for me, it definitely takes time because I'm a very emotional person. और अगर मैं किसी के साथ होती हूँ तो I am 1000% in it. तो मेरे लिए it's very difficult to move on. So it takes time, but then with time it happens. तो सबसे बड़ा ड्यूरेशन क्या रहा है of getting over जो कहते हैं ना? I think 1 साल. And still आपको कभी ना कभी याद आती है चीज़ें, the moments you spent, and every time you go to a place and then it's a nostalgia, and then that the memory which takes you down to the lane that I used to, कोई खाने की ऐसी चीज़ होती है जो आपने उसी इंसान के साथ खाई होती है और आप दोबारा वहाँ जाते तो you feel like oh shit I've had this with him. तो कितने really serious relationships हुए? 2. और ऐसा कभी हुआ है कि लगा कि यार इससे तो टूटना नहीं चाहिए था? यार जिसके साथ भी ब्रेकअप होता है उस वक्त ऐसा ही लगता है ना, नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यू डोंट फॉल फॉर लव और फॉर एनीवन थिंकिंग कि अब मुझे इससे मूव ऑन करना है लाइफ में। एटलीस्ट आई एम नॉट दैट पर्सन. आई एम नॉट समबडी हु इज डिस्कवरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक मिस तो आप आज भी करते हैं, your past relationships or something. Why I said a year is because the kind of profession we are in, you can't be just too focused. If you talk about emotions and just relationship, तो शायद आप भूल ही नहीं पाओगे. So somewhere you have to have a get going. And for girls, I don't know, I feel women are more emotional. Even guys are very emotional. But women are like just, stuck to that particular thing. नहीं यार, मुझे नहीं लगता, honestly. I feel so. Like I can't speak on your behalf, but no, but I've also seen guys जो in fact मुझे लगता है उनको ज्यादा टाइम लगता है रिकवर करने के लिए. Definitely, but that's what I said कि it varies person to person. Like I've had
people who still probably have not moved on, and I've had people who were like ठीक है ना, it was part of my life. तो I think वो gender biased भी नहीं कह सकते एक point. ऐसा कभी हुआ है जब ब्रेकअप हुआ है किसी बंदे के साथ, हाँ, या बंदी के साथ? नहीं बंदा, ठीक है, बंदे के साथ, तो आपको लगा यार अब मुझे प्यार नहीं करना, आई डोंट बिलीव इन लव वगैरह वगैरह? oh yes, ये होता है, और वो हर बार ब्रेकअप के बाद होता है कि इतना ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया किसी पे, यू हैव गिवन योर हार्ट आउट एंड ऑल योर ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, और फिर ऐसे हार्ट ब्रेक होता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, आई वाज सो इन इट. तो तब लगता है कि अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ. ऑल गाइज आर सेम. ओह आई हेट गाइज. गर्ल गैंग के साथ पार्टी करो, ये सब. हाँ, या हमारे साथ भी तो बॉय गैंग के साथ पार्टी करते हैं. Yeah. बट किसी ने आपके साथ रिलेशनशिप में चीट किया? नो, वो नहीं हुआ. I think I am a girl a guy would cheat on for. I like the honesty, baby. 2023 rocks. Yeah. तुमने किसी पे चीट किया honestly? No, I'm not that person. Yeah. Yeah, maybe that's why I've had kind of partners who could never think of cheating. तो फिर आपने उनको डम क्यों किया? Because too much of everything can spoil you, and overpowerment, if someone tries to control you in the garb of love, and वो जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, which you discover after staying with the person, then you realize कि no, because प्यार is not just intimacy, it's about you having the best friend with you, और अगर वहाँ पे इनसिक्योरिटी आने लगे, आपको हर वक्त जस्टिफाई करना पड़े, बीइंग एन एक्टर, तुमने ये क्यों पहना, वहाँ क्यों गई, ऐसे क्यों पोस्ट किया, ये क्यों पोस्ट किया, अरे I can't be doing that. I mean, you have to, and I think it's a byproduct of love, so I can't blame them. If there is no insecurity, there's no possessiveness, it's not love. But then sometimes I think if certain things are not meant for you, I think you just have your own paths. So talking about paths, कभी कभार जो इंसान आपके बारे में पोजेसिव हो जाता है कि ये पोस्ट मत करो, वो पोस्ट मत करो, हाँ. वो कभी कभार आपसे लेस सक्सेसफुल होता है. करेक्ट. एंड स्पेशली विथ वीमेन, जब वीमेन ज्यादा सक्सेसफुल होती है, ये मैं मानता हूँ कि कभी कभार लड़के बड़े ये हो जाते हैं, इनसिक्योर. करेक्ट. क्या आपने लेस सक्सेसफुल लड़कों के साथ रिश्ता रखा है? डेफिनेटली रखा है, एंड इट हैपन्स टू बी. ज़रूरी नहीं है, प्यार में ऐसा नहीं होता है कि यू सी द डिमेंशंस ऑफ द काइंड ऑफ मनी ही हैज़ and the status he has. For me, it has never mattered. For me, the honesty and what kind of human being you are, it's really, really important. So I've never been biased, or मैंने कभी उस चीज़ को देख के नहीं चीज़ें बनाई हैं रिश्ते में. तो definitely I think this is one of the reasons कि ये हुआ है मेरे साथ past में, that when you're more successful, you're making more money, तो somewhere that insecurity. ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, could be wrong, okay? Yeah. मेरा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है कि यार there would have been guys who would not have let go of you. यानी कि ब्रेकअप भी हो चुका है, आप मूव ऑन कर चुकी है, वो कमबख्त बंदा आपके पीछे पड़ा है. Yes. माने आप यहाँ पे आई हो शूटिंग के लिए, दूर से कहीं खड़ा है, Oh ऐसा हुआ स्टॉकिंग टाइप, राइट? I'm getting goosebumps. God, the OG, है ना? Bang on. It's Can I tell you one happened with thing? me. Can I tell you one thing Yeah. honestly? I read people like a book. Really? I promise on God. Yeah, now even I swear by it. I told you. हुआ है ना Yeah. तुम्हारे साथ? Yes. यही हुआ है, और शायद this is one of the reasons that I had to move on, because nobody on this planet can deal with over possessiveness. Beyond a point नहीं, आप रिश्ते में नहीं कर सकते हो ये चीज़. और मुझे तो आई थिंक सारे थोड़े ऑब्सेसिव टाइप के लोग हैं. अभी पूछो, देखो अब तुम सक्सेसफुल हो, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी वेरी अपफ्रंट, सो यू रेडी फॉर दिस, राइट? यस. पहले जब तुम पॉपुलर नहीं थी, फॉर एग्जांपल, आप मालूम है तुमने बिग बॉस किया है, तुम्हारा वीडियो आ रहा है, यू आर देयर, यू अर्नड अ लॉट ऑफ लव इन बिग बॉस एज वेल. बट उससे पहले भी मैं तुम्हारे पैप वीडियो देखता था. करेक्ट. और सबके जहन में एक क्वेश्चन आता था, लड़की करती क्या है? रियली? या करती क्या है? करेक्ट. तो ये फेमस हो गई, या पर लोगों को पता लगे एक लड़का है ओरी करके. ओके. वो भी स्वीट लड़का है, एक्ट्रेसेस के साथ मिलता है, घूमता है, फिरता है, हर पैप वीडियो मेरे, पर करता क्या है किसी को मालूम नहीं. या उसमें आपके साथ होता था ये. करेक्ट. डिड यू फील दिस एज वेल?
कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है? Definitely, I think I'm a person that who definitely has a reality check of life. And मेरे लिए सिर्फ ये बहुत important है कि मैं क्या कर रही हूँ और लोग मुझे मेरे काम से जाने. But उसका एक बड़ा पड़ाव ये है कि आपको famous भी होना है. So जब मेरे को था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे first of all I wanted to be famous. That's why I wanted to be an actor. I wanted to be loved by everybody. And मुझे नहीं पता था how, because I don't come from entertainment background. मेरे घर का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से. And I'm a medicus myself. तो होता क्या था कि फिल्म तो मेरी आ गई. God was kind to me. But ऐसी कितनी फिल्में आती हैं जो लोग नहीं देख पाते हैं और नहीं देखी जिन लोगों ने. So and I believe कि मुझे भी बहुत अच्छी बड़ी फिल्मों का नाम नहीं पता जो मैंने नहीं देखा, and probably I don't even know about those actors. So same had happened with me too. And जिन्होंने देखा देखा, जिन्होंने नहीं देखा नहीं देखा. And then the spotting happened, and people knew me more because of my fitness and looks than my work. कि oh ये actor भी है. You know, ये हुआ है मेरे साथ. तो मैं कहीं भी जाती थी तो हर कोई मुझे बोलता था, oh wow, she's so fit and she's known for her fitness. I'm like, no dude, I am an actor. But nobody knew about my film. So I've had those days of struggle. But having said that, being famous had not translated into work. So I sat down and strategized over a period of time that, dude, what are you doing? What you need to do? You came here to do work, to be loved for your work and acting. And honestly, you keep discovering things when you are in the profession, because no one teaches you, no one guides you. Everybody wants you to fail. That's what I've learned, whosoever I was surrounded by. And even खुद के दोस्त चाहते थे कि आप फेल हो. Of course. There are a lot of people who are just jealous and they won't show, and they are with you apart from one or two and your family. People don't want to see you succeed, honestly. This is what I have learned. And that's why I keep my things under the wrap. I announce it when the things are happening, and I feel जब काम आएगा तो सबको पता चल जाएगा. काम से ही काम आता है. हालांकि I've met amazing people in my life. God has been very kind to me. And that's why I maintain my positivity and sanity. और वो जो face था कि being spotted everywhere, being known for my fitness, and still people don't know what do I do. मैंने 3 OTT बड़े shows किए, and still people didn't know my work. जिनको पता था in the OTT web, but not as a household name. You know, like how TV shows people do. And I had peers with me who had done TV shows in Big Boss, and people had humongous fan following. I had 0 fan following knowing that work base, which I have found after Big Boss. No, you conducted yourself very, very well. मैंने तुमको उस दिन भी बोला. जी. बहुत ग्रेस के साथ किया. Thank you. कभी genuinely तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ है? क्योंकि एक लड़की अकेले बिना फैमिली बैकग्राउंड के इंडस्ट्री में पॉपुलर होना, जी, अकेले रहना, यहाँ पर अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश करना. And I love the fact you said you wanted to be famous. Yeah. ये हुआ मेंटली कुछ बैलेंस? Definitely. No, I won't say that, because I think my upbringing has a lot to do with it. My mom is my fulcrum. There were days when my father, he didn't speak to me for a while because he was scared, he was anxious, ki what is going to happen to my daughter. Nobody knows like what is happening in Bombay, and she's finding her own way out. Now she's saying I have to go to LA, because people didn't take me seriously, Sid. And people used to say that I'm very happy about it, that you have potential, and why don't you have somebody call for you? We'll cast you. And I'm like, I have nobody to call for me, you know. And those are the same people who are calling me, inviting me for parties. I don't go for parties. I don't attend parties. Not because these days, otherwise I love parties. I've been attending parties. Only because I'm focusing on work right now. And I've been hustling and training. That's why I'm just busy. And thanks to all those people, because they really motivated me. I never take it to a stride in a negative manner, because that is something that's what kept me going. For me, those days were very important. And my mother, she played a major role in this. And you know, I think if your family is with you, nothing can stop you. And I totally feel, Sid,
No one, absolutely no one can close the door what God has opened for you. So I think God is my godfather here. And friends like me too. Absolutely, you've been so amazing. You've been so amazing. So yeah, here we are talking today about my new single. So when I talk now, it just gives me flashbacks and it takes me back to, you know, those days and everything. So I remember getting famous and I'm like, spotting, okay, it doesn't translate into work beyond a point. And then people start to hate you if they see you so much. And ideally, you should be known for your work. So that was also a phase which was important. And I think you learn these steps while you're into it.